Shifting focus to another story now, and this is regarding controversy of the NEET exams. And so far, controversy and NEET have been almost synonymous. The pivotal examination for admission into medical colleges of India finds itself in the midst of heat again, and it is facing allegations of malpractices. The Supreme Court today put the Centre and National Testing Agency on notice over the NEET exams, exclaiming that the sanctity of the examination has been affected. The apex court has sought answers from the examination agency. Thousands of students across India have been up in arms against NEET since the results were announced on June 4th. Concerns have been raised as 67 students of 6, in fact, they were from one center. They scored a full 720 on 720 marks. Several students got a mark, say, less at 719 or 2 at 718. And most students say that this kind of score is almost impossible, and it can be attained only if there are technical glitches. And under fire, the National Testing Agency has insisted that the whole process has been above board, and then the marks discrepancies were due to grace marks given to some students who lost time due to technical glitches during the exams. But the clarification has not cut much ice with the aspirants. So the question that we ask on the show tonight: will the NTA come clean on NEET? Joining me on the show, Professor Tiwari, who is the principal of Maharaja Agarsen College here in Delhi University. Anil Nagar is the founder of CEO Adda 24/7. Akhil Tiwari is director of School Toppers. Dr. Bharat Saran is founder of 50 Villagers. We have Salim Dharanidharan of DMK. And we also have two students, Ujjwal and Vivek. And the moment I see those students, perhaps I can see both of them. Ujjwal, let me begin with you. Is the Supreme Court's tough words that the sanctity of these exams have been affected, are they coming as some relief for you? I know all of you are very, very worried about your future, but is this giving some hope? No, ma'am, literally not hope, not any hope. A sanctity, ma'am, जरूर affect हुई है, ma'am, हमारे NEET exams की, और हमारा मैम फ्यूचर आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है जिस एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि हमने इस एग्ज़ाम के लिए मैम 3 साल मेहनत की और मैंने इस बार 646 मार्क्स स्कोर करके भी कोई गवर्नमेंट सीट मिलने मुझे मैम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रही है, क्योंकि 32,000 रैंक मेरी इस बार बन रही है और लास्ट ईयर मैम इस मार्क्स पे 7,000 के अराउंड रैंक बन रही थी, जिसपे बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता था, पर इस साल मैम कोई भी मेडिकल कॉलेज इस मार्क्स पे मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। इस एग्जाम को लेके मैम बहुत ही ज्यादा मैम फैमिली और सब चीज ज्यादा प्रेशराइज था मैम, लेकिन आज के डेट में मैम डॉक्टर बनने के मैम इस मार्क्स पे भी मैम लायक नहीं है। मैम ये हार मेरी अकेले की नहीं है, ये हार उन सभी लोगों की है जो ये चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि 650 मार्क्स पे भी आप डॉक्टर बन सकते हो, एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। पर आज मैम एनटीए ये सारा का सारा मैम प्रूफ कर रहा है कि हम गलत हैं, 650 मार्क्स पे भी हम डॉक्टर नहीं बन सकते मैम। Okay, then please come in. Anil, if this is the concern of the students, and I want to understand from you on what basis were the grace marks given? Which is, if anything, clear example of malpractice. This is a big question mark in the whole controversy. This is a big thing. What is the criteria for these grace marks? Also, they have not told that how much grace marks have been given to these students. They have mentioned the number of students, but they have not mentioned how many grace marks have been given to a specific student. They have given the range. Now, my big question is that suppose somebody got 50 grace marks, or let's say somebody got 100 grace marks, which is possible because they have not clarified. So do we really feel that this person can become a doctor in a such competitive environment where so many people are studying and it's a highly competitive exam? Each mark, even single mark matters. Even on one mark, there will be multiple students who are sitting there. Now they have kept it very vague, and they have said that we have given grace marks,
starting from -20, the person who got -20, till somebody who got 720. Anil, so who decides grace marks? Yeah. I think this is a sad thing that this has come for the first time in the history of NEET. We have not seen it ever in any of the previous NEETs, and suddenly, without any information to candidates or parents, they came up with this concept of grace marks. And that too, they highlighted this, they came up with this when there were questions raised on 718 and 719 marks. They did not inform or explain it in advance, or just to give information to students. So I feel that something is wrong, and this should be thoroughly investigated. In fact, we are demanding CBI inquiry into it. Okay, so you are demanding CBI inquiry. Professor Tiwari, do you think there is a need for a CBI inquiry? You know, because this is an ultra-competitive examination, and these are for undergraduate medical colleges. Lakhs of students all across India sit for these exams, and if they do not have faith in the entire examination system, then there is a need for an inquiry. Of course, Maria, this is one of the most competitive examination in the country, and not only in the country, in the entire world. 2.6 million students, they already filled the form. This is a huge number if you'll see the type of energy, the type of time the students, they are devoting day and night. And not only they are aspiring, their parents are also after their child, their kids, that how they are studying, why they are studying. A number of students, they used to go for the extreme steps, like they are going for the suicide. And we could see that how many number of coaching institutes, they are flourishing throughout the country for these examinations. But the main issue is that why this happened, how this happened. There is all question marks on the NTA. But raising questions are not going to solve the entire mystery. You see, before this centralization of the entire examination, what was happening in the country? A student had to run from pillar to post first to fill the forms in the different state universities and in the different state colleges, number one. Number two, there was complete decentralization, and the pattern of examinations of all the different states, they were different from each other. And the third, there were discrimination for the students who were coming from outside their own states. And that is why the central government has taken a wise decision to centralize this all examination and give it to one of the agencies, which is basically the motto of that agency is to improve the equity, quality of education by administering the research-based, valid, reliable, efficient, transparent, fair, and but I want to understand from you, Akhil. I want to understand from you that when 6 students of one coaching center get full marks, then who is supposed to be answerable for that? It's one examination center, you mean, right? Yes. Maria? Yes. Yes, see, one center, 6 students getting 720 points out that there has been a malpractice in this exam. It's almost impossible. See, if you see the historical trends, getting 720 out of 720, last year only 4 students got 720. This year 67 got, and that too only from one of the centers there were 6 students. So this exactly points out that there has been a malpractice. Most probably there is this case of paper leak, but NTA should come forward and support everyone. Right now what is happening is NTA is hiding behind. NTA is behaving as if they have done something wrong. In case it's a paper leak. Paper leak has happened in the past also in JEE Advanced 1997. Then again it has happened once in NEET. Right? If paper leak has happened, NTA should come forward, support it. We are not blaming NTA if there's a paper leak. If NTA is, we assume NTA is not involved, right? So if NTA is not involved, we should not hide from that fact. In case there's a paper leak, there should be a retest. In case there is not a paper leak, then we can work on things like grace marks, which is random and absurd. So those things can be sorted out. But whatever has to be done very fast, because there's no time. If counseling starts, like Supreme Court has asked to start the counseling, then these things will keep on moving forward, and students will start getting admission. Yes, that's why I want to understand from you, Dr. Bharat Saran, why is it that every year there is one controversy or the other regarding NEET examination? It has not had a single, year which has gone without controversy.
नमस्कार मैम। एनटीए जैसा एग्जाम जब करवाता है तो मैं खुद एक डॉक्टर हूं और बाड़मेर से बिलोंग करता हूं। मैम पहले बता दूं कि मैं गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाता हूं जी। पिछले 10 साल से, और वो बहुत बच्चे अच्छी बात जिनके है। लिए दानदाताओं से मैं पैसे मांग के लाता हूं। और जी। ये इस साल का एग्जाम का हमारा कैलकुलेशन था कि 25 में से हमारे 12 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट आया तो हमारे बच्चों को तो कोचिंग नहीं करवाई, हमने यहीं पढ़ाया। लेकिन एक इतनी उदासी आ गई बच्चों में, सब लोगों में, कि इस बार ऐसा क्या हो रहा है। मैं केवल 25 बच्चों के, उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिनको हमने फ्री पढ़ाया। मिडिल क्लास फैमिली के उन 23 लाख लोगों में से 15 से 16 लाख वो लोग हैं जो उधार पैसे लेकर के कहीं कोचिंगों में पढ़ने गए होंगे इस विश्वास पे कि हमारे देश की एजेंसी निष्पक्ष एग्जाम करवाए। लेकिन पिछले 5 साल में हमेशा पेपर, जैसे बिहार का पेपर लीक हुआ, चलो कितने लेवल पे हुआ कौन जानता, पेपर लीक का मतलब किस स्तर तक गया है, इसका कोई मापदंड तो है नहीं, कोई स्केल तो है नहीं। सोशल मीडिया का जमाने में 10 मिनट के अंदर पेपर पूरे वर्ल्ड वाइड हो जाता है। एक ट्विटर पर वो पहले आ जाता है पेपर, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग कहाँ जा सकते हैं? गरीब लोग और मिडिल क्लास फैमिली की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से होती है। और पहले भी कई बार जब पेपर आउट हुए, जब हम एग्जाम देते थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को सुना, उस सबूत को माना, एग्जाम को वापिस करवाया है। तो मेरा ये मानना है कि बड़ा देश है, बड़े सारे सेंटर्स है, कोई एक आदमी गलती करता है उसका हम बाकी लोग क्यों भुगते हैं? क्या हमारे देश में ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जिसके कारण कि कहीं पर भी पेपर एक आदमी मानवीय भूल करके गलती करता है तो बाकी लोग क्यों भुगते? अब जो बच्चे साथ बैठ रहे हैं, आज पूरे 4-5 दिन से ये जब मीडिया ने इसको नेशनल लेवल पे बात उठाई है तो बात कहीं न कहीं जा रही है। आपने एकदम सही सवाल उठाया है और मैं उनसे भी अग्री करूंगी, अनिल से भी और अखिल से, क्योंकि उन लोगों ने जो सवाल उठाया कि एनटीए के जो बयान आया है, जो उन लोग का एक्सप्लेनेशन आया है, वो थोड़ा सेटिस्फैक्टरी नहीं है. When they say that the grace marks decided on candidates answering efficiency and some students got less time due to glitches and grace marks were given to some students who lost time. I mean, who is deciding all this? On what basis is all this being decided? Tell me about this, Professor Sanjeev Tiwari. Who is deciding all this? Basically, there is a committee is constituted by the NTA to look into the entire matter and what has happened. And moreover, notice is being served by the Supreme Court, Honorable Supreme Court of India. If the inquiry you identified these 1,563 students, which course, the NTA says were compensated for the loss of time. Of course, the NTA officials, they would have been decided that who the students are who have lost their time. And for that, the clarification they have to submit to the Supreme Court that what happened, why this grace marks was given, either the questions were leaked or the questions were easier in comparison to the previous year, so that the almost... So, everything is certainly in the space of gray. There is no black and white in terms of assessment. And there is a lot of, discretion which has been given to these, invigilators, which certainly is a problem. I'm going to come back to all of you, but because this is playing in the domain of politics, we also have a political representation from DMK. Salim Dharan, it's an issue which has been raised by DMK, your party in Tamil Nadu, repeatedly. There are multiple other opposition parties who have been seeking an explanation, and rightly so, because the sheer number or the scale of students who appear for these examinations every year, it's about lakhs of students, their lives and their careers are at stake. But where is the solution? The solution is no NEET. The reason why we've been against NEET is that we strongly believe that entrance exam are antithesis to the concept of merit, is prejudice towards the rich and the urban elite. Even if you look at the recent scores, 60 students have scored 720 out of 720 in NEET, and they all come from a handful of coaching centers. In fact, about 10 of the toppers come from a single coaching center. Does that mean that people who do not study from coaching centers are not smart, or like the other lakhs of people who do not study in this coaching center are not smart? It's not the case. It's just because exams like these are trainable. And you have researchers from across the world, not just India. I can quote SAT, GMAT, GRE, every exam, where you see people from the top rich 1% are being at an advantage, which is why we have been against entrance exam. Also, this biggest problem with NEET right now is the present score. Out of 720, some people have managed to get 719. How is it possible? One question is 4 marks.
right? And if you answer it wrong, it's -1. So you basically lose 5 marks. So if you've done one question wrong, it's 715. How can student get 719? It's not possible. Or even 716 is possible. If they've not answered one question, they get 716. Or if they've answered a question wrong, they get 4 plus 1, so -5. So 715. So 719 is not possible. And also marking has been arbitrary, which is why Supreme Court is very right in saying that NTA is not sacrosanct. And I think it's a very valid observation. So there are 2 points that we have. The one, you don't need entrance exam for medical studies. And second, these exams are also not conducted properly. And I also go on add a third point, which is these are anti-federal, because all the medical colleges are with the state governments. So Tamil Nadu medical colleges are with the state. If there are no defined logic on the basis of which the grace marks are being given, there is clear no, evidence to suggest that a particular incident happened and hence the student should be given. So it is, everything is in the realm of, it's a gray zone. Anybody can be given any marks if you, so it's favoritism which is at play. If anything, malpractices are at play here. But let me go back to the two students who are joining us, and I'll go back to the various coaching center experts who are joining us and asking for solutions. Give us solutions. Solution is stopping NEET altogether. But before that, Ujjwal and Vivek, please on the screen. Vivek, thank you for your patience. What are the concerns? Is Supreme Court saying that this is not sacrosanct the way forward? Do you think NEET examinations should not happen at all? It should be scrapped? विवेक, अगर आप हमारी आवाज सुन सकते हैं, मेरा सवाल है, क्या नीट एग्जामिनेशंस को खत्म कर देना चाहिए जो ऑपोजिशन बोल रही है? चलिए उज्जवल, इसका जवाब आप दे दीजिए। विवेक के लगता है कनेक्शन में थोड़ा ग्लिचेस है। जी मैम, ये एग्जाम को बिल्कुल भी नहीं खत्म करनी चाहिए, बल्कि इनमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। क्योंकि मैम ये हमारे कम्पिटिटिव बहुत 24 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, उनमें से आप 40,000 को ही सीट दे सकते हैं। तो एक एग्जाम जरूर होनी चाहिए जो कि इस चीजों को डिसाइड करे कौन स्टूडेंट जाएगा कौन नहीं जाएगा। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर कम्पिटिटिव नेचर बैठती है। चाहे आगे चल के हम जो भी बने, लाइफ में कम्पिटिटिव नेचर बहुत जरूरी है मैम। तो ये एग्जाम्स बिल्कुल हटनी नहीं चाहिए मैम, बल्कि इनमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उज्जवल, नीट से पहले भी तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते थे। जी, वो स्टेट वाइज होते थे, यूनिवर्सिटी वाइज होते थे, डिफरेंट कॉलेजेस के अलग होते थे, लेकिन होते थे, उसमें कभी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। यस मैम, वो स्टेट वाइज होते थे, जरूर होते थे मैम, लेकिन उनमें मैम डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा होती थी। आज के डेट में मुझे अगर एम्स चाहिए होता पहले की तरह, तो मुझे एम्स के लिए अलग प्रिपेयर करनी होती, स्टेट के लिए अलग प्रिपेयर करनी होती। ये बहुत अच्छी तरीके है कि आप सबको सम्मिलित करके एक एग्जाम के अंदर ला रहे हो, पर इसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है मैम। तो ये आज के डेट में एक पेपर, जी बोलिए। आज के डेट में अगर एक पेपर लीक हो रहा है तो मैम MBBS, BAMS, BHS, PDS सब मैम इस पे डिपेंड करता है। सारी इंट्रेंस सीट इस पे डिपेंड करती है एक एग्जाम पे। तो मैम इनमें बहुत ही ज्यादा मैम ट्रांसपेरेंसी, बहुत ही ज्यादा मैम प्रोटेक्शन के साथ एग्जाम होना चाहिए मैम, ना कि इसमें कोई भी तरह की धांधली होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर प्रिपेयर कर रहा है तो वो लगातार 3 साल 4 साल अपनी लाइफ की दे रहा है इसमें, और वो ये उम्मीद करता है कि वो आगे चल के डॉक्टर बनेगा। और मैम इस तरह के एग्जाम, इस तरह की धांधली में मैम अमीरों के बच्चे आगे निकल जाते हैं और हम मेहनती करने वाले पीछे रह जाते हैं। ये आपके कंसर्न्स मैं समझ सकती हूँ उज्जवल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बता रहे थे डॉक्टर भरत सरन, गरीब परिवार से होते हैं और उनके पास लोन लेकर के वो पढ़ाई और कोचिंग करते हैं। तो अगर उस स्थिति में अगर करते हैं तो क्या ये सही है कि इस तरह की धांधली या फिर मैल प्रैक्टिस जो आरोप लग रहा है वो सही है? जी बोल रहे थे उज्जवल, गो अहेड। जी मैम, बिल्कुल इस तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए। मैं खुद 3 साल से मैम इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। मैं खुद लास्ट ईयर मैम अड्डा 24/7 से मैम यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस मैम अटेंड करके इस एग्जाम को 646 मार्क्स से स्कोर किया। लेकिन आज के डेट में मैम बिल्कुल मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही कि मुझे कोई कॉलेज सीट मिलेगा। फैमिली मैम पूरी तरह से डिप्रेशन में, मैं खुद डिप्रेशन में हूँ मैम कोई समझ ही नहीं आ रहा कि आगे चल के क्या होगा। Ujjwal, don't कोई be रिस्पॉन्सिबिलिटी depressed. एंटी नहीं लेता है। No, I understand and I share your concerns. Don't be depressed because this is one of the many examination that life will have for you. So I'm sure you'll pass with flying colors going ahead. Please go ahead, Dr. Saran. Bharat ji.
से सहमत हूं। एग्जाम हो गए, जिंदगी का निर्धारण एग्जाम नहीं करता है। ये सिर्फ 1 साल का हिसाब किताब था। हम किसान हैं तो जानते हैं कि 1 साल खेती अच्छी नहीं होती, अकाल पड़ जाता है, दोबारा खेती करने में लग जाते हैं। जिंदगी एग्जाम नहीं होती है, जिंदगी एमबीबीएस करना नहीं होता है, जिंदगी डॉक्टर बनना नहीं होता, एक अच्छा इंसान बनना होता है। तो जो भी स्टूडेंट आपको मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनके पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को इतना मजबूत करो कि इन छोटी सी बाधाओं से घबराए नहीं। और जो मैम आपका क्वेश्चन था कि हम इस ट्रांसपेरेंसी को, मैं बिल्कुल स्टूडेंट उज्जवल से सहमत हूं कि ट्रांसपेरेंसी के लिए आप 2 लेवल कर लो, एक प्री एग्जाम करवा लो, एक मेन करवा लो, ताकि एक बार पेपर आउट छोटे लेवल पे हो भी जाता है। मैं वापस कह रहा हूं कि हम इसको क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पर नहीं जा रहा है, तो ताकि दोबारा लेवल पे तो ना हो। पहले नीट ने ऑल इंडिया AIPMT होता था, वो प्री और मेन हुआ था। और जो आपका एक क्वेश्चन था कि स्टेट अलग अलग कराएंगे, तो मैम हम उस दौर से गुजरे हैं। 2003 से लेकर 7 के बीच में जब अलग अलग स्टेट कराते थे, बहुत सारे फॉर्म भरना, डेट क्रॉस हो जाती थी, सबके सिलेबस अलग थे। नीट अच्छा पैटर्न है, लेकिन नीट में ट्रांसपेरेंसी हो, ये 2 लेवल की हो सकती है, प्री और मेन। उससे क्या होगा कि जिस तरह से IIT में पहले होता था प्री और मेंस, इनफैक्ट जो स्टेट वाइज होते थे उसमें भी प्री और मेंस होता था। एम्स और वो सब के लिए मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं, मेडिकल एंट्रेंस, तो मुझे पता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। अखिल आप बताइए, ये जो कंसर्न्स हैं जो उज्जवल हैं, उज्जवल देखिए जिंदगी ठहरती नहीं है, सब लोग लेसन्स ले लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग मेडिकल के एग्जामिनेशन दे रहे थे, मैंने भी दिया और आकर के आज पत्रकारिता कर रही हूँ। जी बोलिए अखिल। हाँ, तो उज्जवल आपको निराश नहीं होना है। पहले तो चीज फर्स्ट विल फाइट। आई फर्मली बिलीव कि नीट रीटेस्ट विल इज गोइंग टू हैपन। सो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना। इनफैक्ट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट रीटेस्ट। रीटेस्ट होगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज कम आउट। तो रीटेस्ट होना ऑलमोस्ट 90% तय है। तो आपको डोंट गेट, इन केस नहीं भी होता है तो 640 पे कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। और बाकी आप में क्षमता है, आप मेहनत करने के रेडी है, तो लाइफ में आप अच्छा कर लोगे। तो डिसहार्टेंड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अगर हो जाता है तो बाद में दुख ना हो कि हम प्रिपेयर ही नहीं कर पाए, फिर से रीटेस्ट हो गया, तो वो दुख नहीं मन में रह जाए। Okay, so let's find an answer to that question. How certain are we that there will be a retest? I think there should be a retest for sure, because if you look at the events which has happened in last 1 month or last 10 days, there's a lot of inconsistency in terms of what NTA has said and what are the concerns which have been raised. For example, I'll just give you one incidence. On 5th, exam was conducted. On 6th, NTA came up with a notice on their website that exam has been conducted smoothly all across India except one center, which is Savai Madhopur. Rest all centers, exam started on time, ended on time. It was peaceful. Now, when there have been so many twists and turns, how come NTA is saying that there was delay or there was time loss on certain centers? And see, and suddenly for that time loss, there is a grace mark also, which is like from where it has come. So in the whole theory that, and also they mention in their prospectus very clearly that when this exam is conducted, and this time exam was conducted on 4,750 centers, and they said that when exam is conducted, we have CCTVs on all the centers, and we monitor it live in a live environment. So we watch it live. So when they watched it live, and on the next day of the exam, they said that exam has been conducted smoothly on all the centers, started on time, ended on time. Then how come this point has come that there was some time loss and there is a grace mark for that. So there have been so many inconsistencies. So you are of the opinion. Okay, let me just quickly move from each and every person here. Anil, you are of the opinion that it should not be scrapped. There should be transparency, some processes, correction of processes is needed. Yes, it should not be scrapped. Okay. What about you, Akhil? NEET retest should be there. NEET retest, but not scrapping of NEET. No, scrapping of NEET is altogether not. Professor Sanjeev Tiwari? Of course, NEET should not be scrapped, and there are some political motives of some of the people who are saying that NEET is absolutely absurd. Right. It's anti-poor. It's basically discriminate. It does not discriminate. It's bring equality, equity, and some improvements required. Besides the political representative on the show, that is Dharani Dharan, everybody else is of the opinion that NEET should continue. The processes have to be fixed. Transparency introduced, but as an examination, it is
the right platform, because all institutes have just one single examination. Please go ahead, Salim. See, it's not just an Indian thing anymore. It's not politics. Even the Harvard professor Sanders wrote this interesting book called Tyranny of Merit, which is where even Harvard, Berkeley have now abolished entrance exams for admission, because they have proved with data this is entrance exams are anti-poor and anti-merit. It only helps coaching centers try to make money. No, but we have a student as well who is of the opinion that it should not be scrapped. See, I cleared AA, AAA and IIT. As a student, I thought entrance exams were good. I'm not saying you scrap IIT exam because they're specialized schools. I'm not saying I'm not saying scrap exams for AIIMS. They're specialized schools. But as medicine as a subject, you recruit through school marks. You have a school exam here in place. So each state has their own set of medical colleges. And anyways, these are specialized examinations, so why not have an entrance test? I think it's only fair to go through the right scrutiny. I have a small point here. Okay, no, I have just enough time for Ujjwal, because he is the student and rest everybody are a different kind of stakeholder. He has his concerns, and I certainly hope that the answers that he has got from various coaching center experts, that Ujjwal will give you some hope and you're not leaving this show hopeless. Ujjwal? यस मैम. कुछ उम्मीद, आप पढ़ाई फिर से शुरू करेंगे? मैम अगर रीनीट होता है तो मैम मैं जरूर इस पढ़ाई को मैम चालू रखूंगा, पर मैं अगले साल के लिए मैम दोबारा ड्रॉप नहीं ले सकता. मैम इतनी एफर्ट ही नहीं करती मेरी फैमिली की मैं दोबारा इस मेंटल टॉर्चर को सह सकूं. क्या मैम मैं यही पूछना चाहता हूं कि अगले साल के लिए मैं दोबारा अगर तैयारी करता हूं तो क्या उम्मीद है कि अगले साल मैं बहुत अच्छा पढ़ के तैयारी एग्जाम दे सकूं, पर एनटीए में कोई धांधली नहीं, कोई आश्वासन मुझे देने वाला हो तो मैं जरूर तैयारी करूं. अगर रीनीट होता है तो मैम उसके लिए मैम जरूर पढ़ूंगा, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा एक मेडिकल सीट के लिए. लेकिन मैम 2025 के लिए मैम कोई तैयारी मैम नहीं करूंगा. मैं जरूर स्ट्रीम चेंज कर लूंगा, पर मैं तैयारी नहीं करूंगा क्योंकि धांधली से भरा हुआ है मैम. अगले साल की कोई गारंटी नहीं है. लास्ट ईयर तक 610 कट ऑफ जाती थी मैम, इस साल 660 कट ऑफ जा रही है मैम. नेक्स्ट ईयर क्या पता है कि 690 कट ऑफ नहीं जाएगी. कैसे बच्चे हम लोग तैयारी करेंगे मैम? 650 इज अ गुड स्कोर मैम. एक बहुत अच्छा मेडिकल सीट 650 पे मिल सकता है, पर आज के डेट में वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा. कल के डेट में 700 का मैं टारगेट रख के पढ़ूंगा क्या? लेकिन आपको तो खुद 650 आया, राइट? यस मैम, 650 आ रहा है, पर मैम इस साल का 658 कट ऑफ जा रहा है मैम ऑल इंडिया कोटा से. मेरी रैंक 32,000 है मैम. लास्ट 23,000 को मैम लास्ट ईयर तक कॉलेज मिली थी मैम. मैं जरूर सपोर्ट कर रहा हूँ रीनीट को मैम, कि रीनीट होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, जिससे कि हम लोग जैसे मेहनती बच्चे आगे बढ़ सके मैम, दोबारा एग्जाम में अच्छा कर सके. इससे मैम उनकी रैंक जरूर नीचे होगी जो मैम चोरी करके आगे बढ़े हैं, जो मैम पेपर लीक करवा के आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारी रैंक जरूर ऊपर बढ़ेगी, हमें मेडिकल कॉलेज जरूर मिलेगा. मैम जरूर मैं रीनीट को सपोर्ट करता हूँ. All right, Ujjwal, thank you so much, and I certainly hope that you get through a good medical college and you fulfill your dreams and also the dreams of your parents of becoming a doctor. So thank you so much for joining us, Professor Sanjeev Tiwari, Anil Nagar, Akhil Tiwari, Dr. Bharat Saran and Salim Dharanidharan. On that note, we are slipping into a short break.